Hello everyone. Myself ashmufareh and welcome to O Digital Future YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात। नेओबैंक क्या है? नेओबैंक एक प्रकार का प्रत्यक्ष बैंक है जो पारंपरिक भौतिक शाखा नेटवर्क के बिना विशेष रूप से ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करके संचालित होता है, जो पारंपरिक बैंकों को चुनौती देता है। नेओबैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सीमा उनके पारंपरिक समकक्षों जितनी व्यापक नहीं है। एक नेओबैंक क्या करता है? नेओबैंक एक प्रकार की फिनटेक कंपनी है जो डिजिटल रूप से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। वे अक्सर बजट और बचत लक्ष्यों के लिए उपकरण प्रदान करते हैं और पारंपरिक बैंकों की तुलना में कम शुल्क और उच्च ब्याज दरों की पेशकश करते हैं। डिजिटल बैंक और नेओबैंक में क्या अंतर है? मूलभूत अंतर स्थापना, स्वामित्व, सेवाओं की श्रृंखला और प्रौद्योगिकी और उपयोगकर्ता अनुभव पर जोर है। स्थापना नेओबैंक बैंकिंग प्रणाली में हाल ही में जोड़े गए हैं, जबकि डिजिटल बैंक या तो पुराने बैंक हो सकते हैं जो इंटरनेट सेवाओं में चले गए हैं, या नए बैंक हो सकते हैं जो पूरी तरह से ऑनलाइन संचालित होते हैं। नेओबैंक का उदाहरण क्या है? चाइम प्रभावशाली 14.5 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ और नंबर 1 सबसे पसंदीदा बैंकिंग ऐप के रूप में जाना जाता है। चाइम अमेरिका में नेओबैंक क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। यह अपनी कोई छिपी हुई शुल्क नीति के लिए जाना जाता है और बैंक ऑफ बैंक के साथ साझेदारी में एक व्यय खाता प्रदान करता है। नेओबैंकिंग एक डिजिटल बैंकिंग सेवा है जो एक ऐप, एक वेबसाइट या दोनों के माध्यम से विशेष रूप से ऑनलाइन संचालित होती है। इसकी आमतौर पर कोई भौतिक उपस्थिति या संबद्ध बुनियादी ढांचा नहीं होता है। नेओबैंक आमतौर पर पारंपरिक बैंक से अपेक्षित सभी सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे सुरक्षित बचत खाते, चालू खाते, बजट उपकरण, धन हस्तांतरण और विदेशी मुद्रा। इसके अतिरिक्त वे पारंपरिक बैंकिंग समाधानों की तुलना में बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हैं। डिजिटल बैंकों और ऑनलाइन बैंकिंग के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन बैंकिंग कई भौतिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली एक सुविधा है, जबकि डिजिटल बैंक बिना किसी रुकावट के काम करते हैं और अपनी सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करते हैं। नेओबैंक हालांकि समान है, बैंकिंग लाइसेंस वाले छोटे व्यवसाय हैं जिनका लक्ष्य बड़े पारंपरिक बैंकों की तुलना में बेहतर ग्राहक सेवा, पारदर्शिता और समग्र ग्राहक अनुभव प्रदान करना है। पारदर्शिता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण डिजिटल बैंक और नेओबैंक दोनों तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। नेओबैंक के लाभ और फायदे। नेओबैंक उन ग्राहकों के लिए कई फायदे प्रदान करते हैं जो भौतिक बैंकिंग स्थानों पर डिजिटल बैंकिंग पसंद करते हैं। आप सवाल कर सकते हैं कि पारंपरिक बैंक के बजाय नेओबैंक का विकल्प क्यों चुना जाए? यहाँ नेओबैंक के लिए अद्वितीय 3 प्रमुख लाभ दिए गए हैं जो बड़े संस्थान अक्सर प्रदान नहीं करते हैं। कम शुल्क और खाता पहुंच। कम शुल्क और आसान खाता पहुंच नेओबैंक ग्राहकों के लिए प्राथमिक आकर्षण है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिनका क्रेडिट इतिहास सही से कम है। नेओबैंक खाता खोलने का अवसर प्रदान करते हैं। ये पहुंच उन व्यक्तियों को लाभान्वित कर सकती है जिन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता है या जिनका क्रेडिट स्कोर कम है, जिससे उन्हें एक ऐसे खाते के साथ नई शुरुआत करने में मदद मिलेगी जो उनकी जरूरतों को पूरा करता है और उनके वित्तीय लक्ष्यों का समर्थन करता है। ग्राहक सहायता। फिनटेक न्यूज के अनुसार नेओबैंक शाखा सेवा प्रस्तावों में व्यक्तिगत स्पर्श बनाए रखने और अधिक परिष्कृत आभासी व्यक्तिगत सहायक अनुभव प्रदान करने के लिए एआई के तत्वों का निर्माण करते हैं। यह व्यक्तिगत स्पर्श, जो अक्सर बड़े बैंकों में गायब होता है, ग्राहकों, विशेषकर पारंपरिक बैंकिंग से असंतुष्ट लोगों के लिए बेहतर धन प्रबंधन और समर्थन सक्षम बनाता है। 2,47,365 उपलब्ध। पारंपरिक बैंकों के विपरीत, जो आमतौर पर बैंकिंग छुट्टियों के दौरान ग्राहक सहायता प्रदान नहीं करते हैं, नेओबैंक 24 घंटे उपलब्ध है। क्योंकि वे ऑनलाइन काम करते हैं, स्थानांतरण अधिक सरल होते हैं और अधिकांश बैंकिंग गतिविधियों के लिए भौतिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। वर्चुअल कार्ड ग्राहकों को नकदी के समान ही उनके पैसे तक पहुंच प्रदान करते हैं और स्थानांतरण में आमतौर पर पारंपरिक बैंकों की तुलना में कम समय लगता है। नेओबैंक में धोखाधड़ी को रोकना। जैसे जैसे बैंकिंग वर्चुअल फर्स्ट या वर्चुअल ओनली दृष्टिकोण की ओर बढ़ती है, उपयोगकर्ताओं की सटीक पहचान करना नेओबैंक के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। ऐसा करने से एक हाइपरव्यक्तिकृत उपयोगकर्ता अनुभव सक्षम होता है, डिजिटल पहचान के लिए एक उच्च मानक स्थापित होता है और वैश्विक केवाईसी कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित होता है। नेओबैंक अपने ग्राहक को जाने केवाईसी प्रक्रिया के लिए पहचान सत्यापन आईडीवी का तेजी से उपयोग कर रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए नियामकों द्वारा आवश्यक है।
सर्वोत्तम आईडीवी सिस्टम ग्राहक को प्रमाणित करने के लिए संग्रहीत बायोमेट्रिक डेटा के साथ सेल्फी से लाइव बायोमेट्रिक डेटा की तुलना करते हैं। नेओबैंक में केवाईसी क्या है? केवाईसी हब पूर्व निर्धारित नियमों और पैटर्न के खिलाफ लेनदेन डेटा की तुलना करके नेओबैंक को संभावित लाल झंडे या संदिग्ध खाता गतिविधियों की पहचान करने में मदद करता है। बैंक केवाईसी क्यों चाहते हैं? केवाईसी का मतलब है अपने ग्राहक को जाने। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैंक ग्राहकों की पहचान और पते के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने में मदद करती है कि बैंकों की सेवाओं का दुरुपयोग न हो। बैंकों को खाता खोलते समय केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है और समय समय पर इसे अपडेट भी करना होता है। फिनटेक के लिए केवाईसी क्यों महत्वपूर्ण है? फिनटेक में केवाईसी समाधान क्या है? केवाईसी समाधान फिनटेक कंपनियों को लागू नियमों का पालन करने और आपराधिक गतिविधि के स्तर को कम करने की अनुमति देते हैं। केवाईसी में ग्राहक पहचान सत्यापन, जोखिम स्कोरिंग और निरंतर निगरानी शामिल है। नेओबैंक ग्राहकों के लिए केवाईसी रणनीति क्यों मायने रखती है? उपभोक्ता त्वरित ऑनबोर्डिंग की मांग करते हैं, लेकिन सुरक्षा से समझौता होने या प्रतिष्ठा को नुकसान होने पर वे जल्द ही कहीं और बैंक जमा कर देंगे। नेओबैंक के उदय ने ये बदल दिया है कि रोजमर्रा के ग्राहक बैंकिंग में सेवाओं की एक श्रृंखला तक कैसे पहुंच पाते हैं। संवेदनशील डेटा और धन की निकटता के साथ साथ बुरे अभिनेताओं के हमले की संभावना के कारण नेओबैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपने ग्राहक को जाने केवाईसी अनुपालन उचित रूप से स्थापित किया गया है। इसमें पूरा नाम, पता और जन्मतिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी संसाधित करके ग्राहक की पहचान सत्यापित करना शामिल है। ऑनपैसिव टेक्नोलॉजीज एक ऑनलाइन बाजीगरी है जो व्यवसायों और व्यक्तिगत उपयोग के लिए एआई संचालित डिजिटल उत्पादों को डिजाइन करने और बेचने की ऑनलाइन प्रक्रिया को बाधित करने जा रही है। ऑनपैसिव अपने स्वयं के डेटा केंद्र बना रहा है, जो उन्हें अपनी नियति को नियंत्रित करने की स्थिति में लाएगा। ऑनपैसिव टेक्नोलॉजी सिंगल साइन ऑन का घर है और इसने ग्रह पर सबसे उन्नत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है। इसे किसी भी आउटसोर्स स्थितियों से मुक्त होकर संचालित करने के लिए पूरी तरह से स्वयं पर निर्भर होने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। बहुत जल्द KYC ओवरिफाई सत्यापन प्रक्रिया जारी की जाएगी। यानी बहुत बड़ा। तो आत्मनिर्भरता को देखते हुए अपनी स्वयं की बैंकिंग प्रणाली और भुगतान प्रोसेसर रखने के बारे में क्या? वे आसन है। नेओबैंक बनाने के बारे में क्या? वह तो ऑनपैसिव टेक्नोलॉजीज और श्री मुफारा होंगे। स्टैकिंग कूल के बारे में बात करते हुए क्या हमने सिर्फ स्टैक शब्द का उपयोग किया था? हाँ, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। Important message now updated in English. We are in it to win it, dear all founders. Have a good day. What is a neobank? A neobank is a type of direct bank that operates exclusively using online banking without traditional physical branch networks that challenge traditional banks. The range of services provided by neobanks is not as broad as that of their traditional counterparts. What does a neobank do? Neobanks are a type of fintech company that offer banking services digitally. They often provide tools for budgeting and savings goals and offer lower fees and higher interest rates than traditional banks. What is the difference between digital bank and neobank? The fundamental difference is the establishment, ownership, range of services and emphasis on technology and user experience. Establishment neobanks are recent additions to the banking system, whereas digital banks can be either old banks that have moved to internet services or new banks that operate fully online. What is an example of a neobank? Chime, with an impressive 14.5 million users and known as the #1 most loved banking app, Chime is leading the neobank revolution in the US. It's known for its no hidden fee policy and offers a spending account in partnership with Bank. Neobank is a digital-only banking service that operates exclusively online through an app, a website or both. It generally has no physical presence or associated infrastructure. Neobanks typically offer all the services and features expected from a traditional bank, such as secure savings accounts, current accounts, budgeting tools, money transfers and foreign exchange. Additionally, they use the latest technologies to provide superior experiences compared to traditional banking solutions. It's important to distinguish between digital banks and online banking. Online banking is a feature offered by many physical banks, whereas digital banks operate without a brick-and-mortar presence and provide all their services online. Neobanks, though similar, are small businesses with banking licenses that aim to offer superior customer service,
transparency, and overall customer experience compared to larger traditional banks. Both digital banks and neobanks are becoming increasingly popular due to their commitment to transparency and customer satisfaction. Benefits and advantages of neobanks. Neobanks offer several advantages for customers who prefer digital banking over physical banking. Locations. You might question why to opt for a neobank instead of a conventional bank. Here are 3 key advantages and benefits unique to neobanks that large institutions often don't offer. Lower fees and account access. Lower fees and easier account access are primary attractions for neobank customers. Even for those with a less than perfect credit history, neobanks provide an opportunity to open an account. This accessibility can benefit individuals who need more resources or have lower credit scores, enabling them to start anew with an account that meets their needs and supports their financial goals. Customer support. According to FinTech News, neobanks build on elements of AI to maintain the personal touch in branch service offers and offer a more sophisticated virtual personal assistant experience. This personal touch, often missing from larger banks, enables better money management and support for customers, particularly those dissatisfied with traditional banking. Available 247,365. Unlike traditional banks, which usually don't provide customer support during banking holidays, neobanks are available round the clock. Because they operate online, transfers are more straightforward, and most banking activities don't require a physical location. Virtual cards offer customers access to their money, similar to cash, and transfers typically take less time than those from conventional banks. Preventing fraud in neobanks. As banking shifts towards a virtual-first or virtual-only approach, accurately identifying users becomes a top priority for neobanks. Doing so enables a hyper-personalized user experience, sets a high standard for digital identification, and ensures compliance with global KYC laws and regulations. Neobanks increasingly use identity verification (IDV) for the Know Your Customer KYC process, required by regulators to prevent money laundering. The best IDV systems compare live biometric data from a selfie with stored biometric data to authenticate customer. What is KYC in neobanks? KYC Hub helps neobanks identify potential red flags or suspicious account activities by comparing transactional data against predefined rules and patterns. Why do banks want KYC? KYC means Know Your Customer. It is a process by which banks obtain information about the identity and address of the customers. This process helps to ensure that banks' services are not misused. The KYC procedure is to be completed by the banks while opening accounts and also periodically update the same. Why is KYC important for fintech? What is a KYC solution in fintech? KYC solutions allow fintech companies to comply with applicable regulations and minimize the level of criminal activity. KYC includes customer identification, identity verification, risk scoring, and ongoing monitoring. Why a KYC strategy matters to neobank customers? Consumers demand swift onboarding, but they'll soon bank elsewhere if security is compromised or reputational harm occurs. The rise of neobanks has transformed how everyday customers access a range of services in banking. By its proximity to sensitive data and money, plus the potential for bad actors to strike, neobanks must ensure that proper Know Your Customer KYC compliance is instituted. This involves verifying customer identity by processing personal information such as full name, address, and date of birth. OnPassive Technologies is an online juggernaut that is going to disrupt the online process of designing and selling AI-driven digital products for businesses and personal use. OnPassive is building its own data centers, which will put them in position to control its own destiny. OnPassive Technologies is the home of the single sign-on and has built the most advanced ecosystem on the planet. It is being designed to be self-contained, completely relying on itself to operate free of any outsourced situations. Very soon, the KYC Overify verification process will be released. That is enormous. So, looking at being self-contained, what about having its own banking system and pay processes? Those are imminent. What about building a neobank? That would be so. OnPassive Technologies and Mr. Mufara. Talking about stacking the cool, did we just use the word stack? Yes. Please subscribe, like, and share with the ones you love. Thanks for watching our videos.